people, welcome to Prep Elevate. Let's continue with the decision making series. This question is from ZAT 2020. ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं क्या है. रूल्स अभी तक आपको याद हो गए होंगे. आई एम प्रीटी कन्विंस्ड अबाउट इट. ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, नथिंग मेजर, जस्ट विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है. ठीक है, एक्सट्रीम डिसीजंस नहीं लेना है, सैक्रिफिशियल डिसीजंस भी नहीं लेना है, बस इतना ही ध्यान रखना है हमें. देखो, विंध्या, शबनम, अमला are interning at software organization as part of the requirement of their B school curriculum. Okay, so ये तीन interns हैं, software company में intern कर रहे हैं. The organization has allotted each of them a project based on their area of specialization. Okay, जब आप B school में जाते हो, एक particular specialization आप pick करते हो, right? उसमें आप graduate होते हो. तो depending on कौन सा specialization है उनका, अकॉर्डिंगली उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है उस कंपनी में. इन द फर्स्ट मीटिंग विद द एचआर हेड, they are informed of a PPO possibility, pre-placement offer, that is an offer to join the company after that MBA based on their performance. So obviously internship बहुत ही important है उनके लिए. They have been informed कि if you perform well, we are willing to offer you a position, a permanent position at the same company. ठीक है. All of them are eager to convert their internship into job offer. ठीक है, that goes without saying. Each of them is assigned a mentor who evaluates the intern's performance along with the HR head. ठीक है, तो along with the HR head, each of them they have been allotted a mentor who is going to take care of, if everything is on track or not. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. In the second week of her 8-week internship, okay, 8 week का internship है, second week की ये बात है, Amala realizes that the project requires input from subjects she studied in her third trimester. Okay. However, during the third trimester, Amala was significantly distracted by an inter-college sports meet, affecting her grasp of the subjects. Okay. जब आप एक पर्टिकुलर करिकुलम में होते हो, राइट, कॉलेज में होते हो, बी स्कूल में होते हो, सेमेस्टर वाइज आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो. तो अभी अमला का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें शी रिक्वायर्स एक्सपर्टीज ओवर द सब्जेक्ट्स व्हिच वर टॉट इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर. थर्ड है या सेकेंड है? थर्ड. ओके, थर्ड. ठीक. तो उस टाइम ना अमला एक इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट में बिजी थे. ठीक है, सो शी वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन इट. तो इन डेप्थ नॉलेज नहीं है उनके पास इस सब्जेक्ट्स के ऊपर, बट अब उसी की जरूरत इन्हें पड़ रही है इनके करंट प्रोजेक्ट में. Which of the following is the most appropriate way forward for अमला? तो या तो उन्हें वापस जाकर पढ़ना पड़ेगा, या तो उन्हें छुपानी पड़ेगी ये बात. इफ शी डज नॉट वांट टू डिस्क्लोज, विच इज डेफिनेटली नॉट वेरी एथिकल. तो उन्हें सोचना पड़ेगा, लाइक हाउ इज शी गोइंग टू डील विद इट. अब वो टाइम तो चला गया, किसी तरह शायद पेपर्स तो पार कर लिए उन्होंने, बट अभी जब इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, शी इज गेटिंग स्टक. तो अभी क्या वे फॉरवर्ड है उनके लिए? देखो, अमला शुड सीक शबनम्स हेल्प who performed well in the third trimester. Okay, she can do that. They are from the same college, probably they are on good terms, and hence this option has come up. She can, but the thing is, Shabnam also has her own project to handle. How much will she be able to help Amala in this case? That is not known. This could be one of the choices if we don't find something better. और क्या है? Amala, after studying the organization for a week, should design her own project and pitch it to her mentor. This is going against what was pre-decided. She's just an intern. She probably does not have the authority to take such decisions. Also, it is not known how well will that be taken by the organization. Okay, so she should stick to what has been instructed and informed. Okay, rather than coming up with her own choices, which may not sit well with the institution or her mentor in that case. Amala should request her mentor to allocate a different project because of her limited familiarity with the inputs required. Now, while this is honest, this is not a very professional take. You will always get something that you are unfamiliar about. How many times are you going to drop things? How many times are you going to step back? And also, she is just an intern. She has to create a really solid impression so that her internship is converted into a permanent job opportunity. Now, if she decides to go back and ask for a different project and stuff, does not talk good about her. Okay, so she might come across as somebody who is not willing to go the extra mile, which definitely is not very well appreciated.
ठीक है, तो ये तो नहीं कर सकते. Amala should disclose to the mentor her limited understanding of the required inputs and seek his suggestions. This is a very wise option. You've been allotted a mentor who is there to help you along the way and not just to give his final judgment on your, ways of working. She should disclose that, this is the reason that I do not really have an authority over it, over these subjects. So, as per your expertise and experience, what is the right stance for me to take? What is the way forward for me? Now, this is official, this is ethical. She's not disclosing or hiding anything. She's being honest while showing that she has a, attitude to rectify. Corrective actions are appreciated. So definitely this looks like a strong choice and definitely stronger compared to A now. So A को तो अब हम reject कर ही सकते हैं. Amala should realize that she may not get a PPO and so focus on networking with the experienced talent in the organization. You can't jump the gun. आप खुद नहीं decide कर सकते कि होगा नहीं होगा, इस basis पर तो होगा ही नहीं. This talks about wasting opportunities, which is not valued, respected or appreciated in the, for that matter. तो बेस्ट क्या है कि आप अपने मेंटोर से बात करो. आपको एक मेंटोर असाइन किया गया है, उन्हें बताओ कि ये डिसीजंस है, ये हमारा दिस इज द करंट सिनेरियो एंड सीक हिज सजेशंस, और जो भी वो सजेस्ट करे आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हो. ठीक है, और देखो ओके, विंध्या's project is about understanding employee perception regarding organizations HR policies. ओके, तो जो HR पॉलिसीज है कंपनी में, उसको लेकर एम्प्लॉयज का क्या परसेप्शन है, उसके बारे में विंध्या का प्रोजेक्ट है. अगेंस्ट हर ओन इंस्टिंक्ट, she is suggested by her mentor to interview only the good performers identified by his office, because poor performers, he believes, usually crib against the policies. अच्छा, ये आपने यूजुअली देखा होगा कि कभी कभी ना वी ट्राई टू नॉट बी सो एथिकल इन आवर अप्रोचेस. बहुत ट्रांसपेरेंट हम नहीं होते हैं बिकॉज समहाउ वी एंटिसिपेट दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो इन आवर फेवर. तो अभी क्या है, विंध्या का प्रोजेक्ट है कि जो HR पॉलिसीज है कंपनी में, उसका परसेप्शन क्या है एम्प्लॉयज में. हाउ डू दे परसीव द पॉलिसीज टू बी. अभी some people might be absolutely satisfied, some people might be mildly satisfied, while there could be people who are absolutely dissatisfied with the policies. हर तरह के लोग आपको मिल सकते हैं. तो Vindhya probably is trying to be fair, that she wants to take inputs from everybody, but against her instinct, okay, her mentor, her assigned mentor, he or she says that just try taking input from the top performers, or people who have been performing well, because जो अच्छा perform नहीं कर रहे हैं ना, they are anyways going to hate the office. So anything about the office, they are going to crib and complain about it. So we do not really need to take their complaints into consideration, because ultimately this is nothing but only complaining. Okay, so he does not want the report to be skewed. Probably he does not want that transparency to be maintained. He wants कि कंपनी का जो फेस है ना, फेस ऑफ द कंपनी शुड बी सेव्ड, एंड हेंस just take inputs from people who are satisfied and who we've given promotions to, who are top performers. They'll just give you good inputs. तो उन्हीं का बस inputs ले लो आप. ठीक है, बट ये तो गलत होगा. जब हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता करना है, परसेप्शन एनालिसिस इज ऑलवेज ऑफ द कलेक्टिव एंड नॉट ऑफ द सिलेक्टिव. ठीक है, अब देखो, which of the following courses of action will best enable Vindhya to provide the organization with a complete picture. ये देखो, कंप्लीट पिक्चर देना चाहती है विंध्या. कंप्लीट पिक्चर मतलब आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. अब प्रॉब्लम क्या है, विंध्या इज जस्ट एन इंटर्न. ठीक है, शी डज नॉट रियली हैव दैट फैकल्टी टू एक्सरसाइज, राइट. उनके मेंटोर ने उनको एक वे सजेस्ट किया है. देयर इज ऑलवेज अ रिस्क व्हेन यू गो अगेंस्ट समबडी हु इज एक्सपीरियंस्ड एंड वेल प्लेस्ड एट द सेम ऑर्गेनाइजेशन. सो यू हैव टू प्ले इट सेफ, बट यू ऑल्सो हैव टू बी एथिकल, और जो आपको टास्क दिया गया वो तो आपको कंप्लीट करना है. तो कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए इनपुट्स तो आपको लेने हैं, बट प्रॉब्ली प्रेजेंटेशन हैज टू बी इन अ वे दैट वो इतना ब्लेटेंट ना लगे कि दैट वी आर टेकिंग साइड्स एंड कंप्लीटली गोइंग अगेंस्ट आवर मेंटर. थोड़ा बैलेंस्ड डिसीजन. ठीक है, अभी देखो, विंध्या शुड कंप्लीटली कंप्लाई विद हर मेंटर सजेशन. नॉट रियली, बिकॉज फिर वो कंप्लीट पिक्चर देने का जो टास्क है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग अगेंस्ट हर इंस्टिंक्ट, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दिस इज नॉट एथिकल. ठीक है, Vindhya should meet only those identified by her mentor, but also collect information from them as to why other colleagues are disgruntled.
ये एक अच्छा चीज हो सकता है, दिस कुड बी अ गुड वे गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अल्टीमेटली हम मेंटोर का वर्ड भी रह रहा है, बट क्योंकि शी इज आस्किंग दोज पीपल अबाउट द कलीग्स की जो डिसग्रंटल इज डिससैटिस्फाइड, कि जो डिससैटिस्फाइड लोग हैं उनका डिससैटिस्फैक्शन का क्या रीजन हो सकता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सो शी इज बेसिकली keeping the word of her mentor but also following her gut instinct and completing the job assigned to her while not stepping out of the boundaries. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड एंड मच्योर टेक कि अच्छा मेंटोर ने बोला जो सेटिस्फाइड जो लोग हैं, यू नो लाइक जो जो मेंटोर ने आइडेंटिफाई किए उनसे हम इनपुट ले लेते हैं, बट उनके थ्रू पता करने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग डिससैटिस्फाइड एक्चुअली क्यों है, तो उससे क्या होगा, एक कंप्लीट पिक्चर भी मिल जाएगा, बट आई एम नॉट टेक्निकली गोइंग अगेंस्ट माई मेंटोर। ठीक है, और देखते हैं, Vindhya should report this restraint to the HR head requesting her immediate intervention in the project. This is not how corporate works. I have mentioned in a lot of other questions also. This is very primary school, action. कि अच्छा मेंटोर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रहा है एक्शन का, एचआर को कंप्लेन कर दिया, एचआर के साथ नहीं हो रहा है, उनके बॉस को कंप्लेन कर दिया, सो हायरार्की में हम कंप्लेन करते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कॉर्पोरेट्स में ऐसा नहीं होता। You should know how to tackle problems and not create new ones, है ना? So ये ध्यान में रखना चाहिए। Vindhya should ignore her mentor's directive, collect data from all, but compile reports separately for the good performers and the poor performers. No, आप इस तरह से completely ignore करके और फिर separately compile करके, this is not the right way to go forward. उससे बेहतर ऑप्शन तो हमारे पास बी में है, तो this is not a very good choice। ठीक है, Vindhya should request the HR head to allot her another mentor without divulging the reason. First, this is not possible. आप ऐसे ही अपने whims and fancies के हिसाब से जाकर नहीं बोल सकते कि चेंज कर दो मेरा मेंटोर, आई एम नॉट हैप्पी, एंड आप रीजन भी नहीं दोगे, नहीं, यू कांट से कि अच्छा पर्सनल रीजंस, नो कमेंट्स, दिस नॉट योर पर्सनल लाइफ। he has been assigned, he or she has been assigned as her mentor. I think she is suggested by her mentor, his office, okay, he is a mentor, he है, ठीक है, तो he has been assigned as her mentor because he has the expertise, probably he has the credibility to serve as her mentor। तो डायरेक्टली आप एज एन इंटर्न जाके किसी की अथॉरिटी को इस तरह क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऑब्वियसली फॉर रीजंस व्हिच आर जेन्युइन एंड यू आर फेसिंग रियल प्रॉब्लम्स, obviously that is a choice available with all, but इस वजह से नहीं कि इन्होंने मुझे ये करने के लिए बोला है पर मुझे तो इस तरह से करना था, आप चेंज कर दो मेरा मेंटोर, ही इज गोइंग टू कम विद अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड कुछ और हो सकता है, अलाइनमेंट हो हमेशा आपका 100% लोगों के साथ, ऐसा जरूरी नहीं है कॉर्पोरेट में, बट यू हैव टू स्टिल वर्क योर वे आउट, एंड वर्क योर वे आउट भी होता है कि अच्छा जिन्होंने आपको बोला मैंने उन्हीं को इंटरव्यू किया, बट मैंने उनसे पूछा बेसिकली कि बाकी लोगों का ओपिनियन क्या है, ताकि ये कंप्लीट पिक्चर मुझे मिल पाए, तो मेरी भी बात रहेगी और आपकी भी बात रहेगी, इस तरह से बैलेंस करते हुए चलना है, विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है। ठीक है, okay, so you guys keep practicing these sets, okay, so that you get comfortable, at least last 5 years decision making के सारे questions cover करके जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, so that you have a better understanding कि किस तरह के questions को एक्सरसाइज सही मानता है, किस तरह के आंसर्स को, किस तरह के responses को वो सपोर्ट करता है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, so thank you so much for tuning in, I'll see you in the next one।